एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप न्यूमेरिकल्स करने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थ्योरी. Normal adjustment case where the final limit is formed at infinity. Now the rays will be parallel. जो incident rays होंगी वो parallel होनी चाहिए because we are seeing heavenly objects. जैसे आप अर्थ से मून को देख रहे हो तो वो infinitely distance पे placed है. So parallel rays will fall on the objective lens and they will converge at the focus. तो ये f0 होना चाहिए और यही fe भी होना चाहिए. This image should be formed at the focus of the eyepiece so that we get इमेज एट द इंफिनिटी. तो आप एक रे यहाँ से भी लेके जा सकते हो ऑप्टिकल सेंटर से एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. वेरी इंपॉर्टेंट, कीप दिस इन माइंड. द ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज फोकल लेंथ. f0 is much greater than fe and aperture is also very large as compared to eyepiece. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उल्टा था. देयर fe was greater than f0, लेकिन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है. fe slightly greater than f0. अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर m क्या है? इट इज रेशियो ऑफ एंगल बीटा टू एंगल अल्फा. एंगल बीटा क्या है? इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज. फाइनल इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे. उसने कितना एंगल सबटेंड किया है? ये वैल्यू है बीटा की. ठीक है. नाउ फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड टैन बीटा. बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन बीटा. अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन अल्फा, क्योंकि दोनों वैल्यूज, दोनों एंगल्स बहुत स्मॉल है. नाउ टैन बीटा इज perpendicular upon base. तो ये क्या है? h upon what is base? This is fe. And what is alpha angle? Alpha is the angle of which the object subtends at the lens or the eye. So this is alpha. ये vertically opposite से ये भी alpha होगा. तो यहाँ पे आप tan alpha लगा दो. This is h by f0 and you get f0 upon fe. This is formula of f. This is formula of magnification. Now let's do the question. You're given the following three lenses. Which two lenses will you use in eyepiece and as an objective to construct astronomical telescope? Okay, astronomical telescope में अभी हमने देखा aperture should be very large, है ना? तो aperture large होना चाहिए. किसका? objective का. तो ये objective हो सकता है. This can be taken as objective. And इन दोनों में से मुझे eyepiece choose करना है. eyepiece should have lesser focal length. fe should be greater. Well, should be less, है ना? fe less होना चाहिए, तो जिसका power greater है वो ज्यादा less है. तो L3 can be used as eyepiece and L1 can be used as objective. इन दोनों में से हमने eyepiece ये क्यों choose करा? क्योंकि इसका power greater है. जिसका power greater है उसकी focal length less होगी. Power is inversely proportional to focal length. Next question. The magnifying power of an astronomical telescope is 24. M is 24. Then in normal adjustment distance between two lenses is 150. अब आप ये figure देखिए. In normal adjustment distance between the two lenses is, ये क्या है? f0 plus fe. So f0 plus fe is 150. Find the focal length of the objective lens. M का formula क्या था? f0 upon fe. This is 24. तो f0 को आप put कर दो 24 fe plus fe. I have put value of f0 here. 25 fe is 150. Fe is 150 upon 25. This is so fe is 6. f0 will be 6 into 24. 144. Answer is 144. f0 is 144. Okay, and the other two questions are similar. You can do it and please answer in the comment box.